Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine, students. Yes, beta. Today we will discuss exercise of part B. So, students, let's move on to the B2 part. And students, I hope that all of you have tried this exercise well. Now, students, let's discuss. On the basis of your understanding of the poem, complete the summary of the poem. The teacher wants to teach her students how to lead their life nicely on this earth, how to overcome the struggle and strife that one faces, and how to improve their worth. She does not want her students to have only bookish knowledge. Okay. What is more important is that they should be able to choose the proper path, or we can say right path. They should be able to distinguish between right and wrong, as well as appreciate the beauty of nature. She feels that she will have done her duty sincerely if she can teach the children to develop wisdom and grace. Finally, she prays to God to guide her in making this world full of individuals who have confidence, character, and happiness. Now, students, let's move on to the B3 part. Select an appropriate title for each stanza from the choices given below. Yes, students, for the first stanza, we can choose the title A Prayer. So, here some titles are given to you like beta, A Satisfied Soul, A Prayer, The Guiding Force, correct judgments. From here, students choose the correct title for the stanza, and then students write down in the space provided to you. For stanza 1, students, we can choose the title A Prayer. For stanza 2nd and 3rd, we can choose the title Correct Judgment. For 4th stanza, students, Satisfied Soul. And students, for the stanza 5th, we can choose the title The Guiding Force. Okay, I am repeating. For stanza 1, students, A Prayer. For stanza 2nd and 3rd, Correct Judgment. For stanza 4, Satisfied Soul. And for stanza 5, The Guiding Force. B4 part. Select any 4 students in your class for a survey. Speak to them and find out whether they have been influenced by a teacher who brought about any change in their behavior, personality, or academic performance. Yes, students, you can talk to your friends. Okay, बेटा आप अपने friend से बात कर सकते हैं. Okay, and then students find out कि whether they have been influenced by a teacher, क्या वो किसी teacher से influenced हैं who brought about any change, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बेटा चेंज आया, उनके बिहेवियर में चेंज आया, उन स्टूडेंट्स के उनकी पर्सनालिटी में या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में. एंड स्टूडेंट्स आफ्टर दैट बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर survey. For example, students, in the first column you can write down name of the student. Here students, you can write down the name of your friend. Okay, name of the student, the name of the teacher or teachers. ठीक है बेटे, किसी टीचर की वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, दैट ओके यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट टीचर हियर. ओके, देन सब्जेक्ट टॉट, कि वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर. ओके, देन इन लास्ट कॉलम स्टूडेंट चेंज ब्रॉट अबाउट इन द स्टूडेंट, कि क्या चेंज आया है बेटा उस स्टूडेंट में, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया है, उनके बिहेवियर में चेंज आया है, या एकेडमिक परफॉर्मेंस में कहाँ चेंज आया है, दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर survey. Do it yourself, students. Okay, now students, let's move on to the B5 parts. In the poem, the teacher wants to teach her students improve their worth. Now, what does this expression improve their worth mean? It means, students, to give value to your life. Okay, and how, students? By achieving something worthwhile. And students, how can students improve their worth? Students can improve their worth by doing hard work to achieve their goal. Okay, now students, B6 part, values.
In the poem, the teacher wants that the students should be able to make a distinction between the right and the wrong. Why is it important for us to treat the righteous path? बेटा हमारे लिए क्यों important है कि हम जो righteous path ही choose करें, जो right है हमारे लिए वही बेटा choose करें from right or wrong. Students, if we choose the right path, then we can achieve our goal easily. तो बेटा हम अपने goals जो बहुत easily achieve कर सकते हैं, हमें उसके लिए बाद में repent नहीं करना पड़ता है कि हाँ हमने जो है गलत path choose करा है. If we choose the right path, then students we can achieve our goals easily. And students, there would be no difficulties around us, okay, if we choose the right path. Now students, let's move on to the B7 part. Students, part B6 and B5 you can write down as per your wish, okay, in your own words better you can write down that. Now B7, read this diary entry to a math teacher who is very thrilled about the result of his entire class, especially of a student Vaibhav, who has shown a very positive change. Now students, first of all we will write down the date, then time, then day. It's the format of a diary entry. We have to write down this. Next students, today I'm very thrilled means happy. Thrilled means students क्या होता है? Happy. Okay. Today I'm very thrilled to see the performance of 7th P in maths. All the students have done so well in exams that the average result of this section is the best among all. To think that it was once considered to be the worst performing section. पहले एक ऐसा section था worst performing in the class 7th. These students have made me feel proud of them. और बेटा अब उनका result बहुत अच्छा है तो teacher क्या बोल रहे हैं that these students have made me feel proud of them. I am especially happy about Vaibhav, who has shown a wonderful result and kept his promise of becoming a disciplined student. His changed behavior and attitude have impressed the students as well as the teachers. उसके behavior में बहुत ज़्यादा change आ गया बेटा, उसके attitude में, behavior में, okay. And students, I am so happy to be teaching a bunch of such sweet children. Let's move on to the B8 part. Imagine yourself to be Vaibhav. Write a diary entry expressing your feelings of happiness and a sense of achievement on performing so well. Also mention your feelings of gratitude. Gratitude means students thanks to your teacher who has been the guiding force behind you. Now students, you have to imagine yourself as Vaibhav, and after that students write down a diary entry, and students in that diary entry express your feelings of happiness. क्योंकि बेटा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है तो जो भी आपकी हैप्पीनेस की फीलिंग्स है स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू एक्सप्रेस इन दैट डायरी एंट्री. एंड देन स्टूडेंट्स राइट ऑन योर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आप अपने टीचर को जो कि आपके लिए गाइडिंग फोर्स की तरह थे बेटा उनको कैसे आप थैंक्स करना चाहोगे. राइट डाउन दैट हियर स्टूडेंट्स. For that students we can write down like a date, day and time. First of all we will write down date, day and time. Then students we can write down like this. Today when my maths teacher appreciated me for my performance, I was thrilled. वो बहुत खुश हो गया था. So we can write down because we are writing as Vaibhav. So students we will write down I was thrilled. Okay. Today, when my math teacher appreciated me for my performance, I was thrilled. I thanked him for his guidance that made me a successful student today. He brought a valuable change in my life. I prayed to God to fulfill all his dreams. Like these students, try to frame the diary entry and write down your feelings here. Okay students, now beta let's move on to the part C. Write the things sold by the following people with the help of the clue box. Okay students, here a clue box is given to you. Now students, just we should match it. Okay, let's match students now. First one beta, draper, it's related to cloth. Then butcher, related to meat. Then pharmacist, related to medicines. Then jeweler, related to ornaments. Then greengrocer, fruit and vegetables. Baker, related to bread. Stationer, paper and pens.
confectioner related to cakes and sweets, you can write on here. News vendor related to newspapers. Okay, like the students try to write on. For the first, cloth, then meat, medicines, ornaments, fruit, vegetables, then bread, then paper pens, then cakes, sweets, and last, newspaper. Like the students try to complete this part. Now students, read a story about Munisami, who is a street vendor. Street vendor क्या होता है स्टूडेंट? जो स्ट्रीट में आके गलियों में बेटा सामान बेचते हैं, उनका एक ट्रेड होता है ये, ठीक है, उनका काम होता है. नाउ रीड अ स्टोरी अबाउट मुनिसैमी हु इज़ अ स्ट्रीट वेंडर and sells sweets to school children. One day, while going for work, a small accident brings about a change in him. एक उसका एक्सीडेंट हुआ बेटा, जिसकी वजह से उसके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. Read yourself to find out what happens to him. Read this chapter yourself to find out students what happens to him, कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बेटा उसके नेचर में चेंज आ गया. And how he turns a new leaf in his life. कैसे उसकी लाइफ बेटा बिल्कुल चेंज हो गई. ये स्टूडेंट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ही वॉज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स. He had his own peculiar method of advertising and doing business. उसका खुद का बेटा मेथड था बहुत अच्छा सा, ये किस तरीके से वो अपनी एडवर्टाइजिंग करता था और बिजनेस चलाता था. He never depended upon others for help. वो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था स्टूडेंट्स. And worked hard all alone. I speak of Munisami. हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स यहाँ? Munisami, the man who sold sweets. His customers were children. उसके कस्टमर कौन थे स्टूडेंट्स? Children, the future citizens of world. At the stroke of 9 o'clock स्टूडेंट वो क्या करता था? In the morning, Munisami would stand in front of the school. वो स्कूल के सामने जाके खड़ा हो जाता था. कहाँ पर बेटा? In front of the school with his tray of sweets. अपने हाथ में बेटा एक स्वीट्स की ट्रे लेकर. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो स्टूडेंट्स. टिल अबाउट 11 o'clock तक बेटा वहीं रहता था. द सेल वुड बी ब्रिस्क. ब्रिस्क में स्टूडेंट्स बहुत क्विक, बहुत बिजी रहता था वो वहाँ पर 11 o'clock तक. एंड आफ्टर दैट ही मूव्ड ऑफ टू अदर प्लेसेस. और इसके बाद वो दूसरी प्लेसेस पे चले जाता था स्टूडेंट्स. इवन व्हेन द स्वीट्स बिकेम स्टिकी इन द हीट. बेटा हीट जब होती है गर्मी से बेटा उसकी जो स्वीट्स है वो कैसी हो जाती थी? स्टिकी. His business never slackened, but उसका जो है कस्टमर्स उसके कम नहीं होते थे स्टूडेंट्स फिर भी. At 5 minutes to 1 in the afternoon, he again presented himself near the school. Between 1 and 2, the lunch hour for children, he did good business and at 2:30 went away to sell in the streets. He would go around every nook and corner. बेटा हर जगह, हर गली के कॉर्नर पे चला जाता था अपनी सेल करने के लिए ऑफ द टाउन एंड ट्राई हिज लक. और अपना लक आजमाता था. एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ अगेन एट द स्कूल एट 4. अगेन बेटा 4 o'clock स्कूल के पास आ जाता था. Thus Munisami found a thriving business in vending sweets. इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है Munisami found a thriving business in vending sweets. There was depression in his trade. उसके ट्रेड में जो उसको वर्क कर रहा था स्टूडेंट्स उसमें डिप्रेशन आ जाता था. इतनी अच्छी बेटा उसकी सेल थी तो उसमें डिप्रेशन कैसे आ गया? देयर वॉज डिप्रेशन इन हिज ट्रेड ओनली व्हेन द हॉलीडेज केम. जब वेकेशन होती थी बेटा, जब बच्चे जो है स्कूल्स में नहीं होते थे, देन देयर वॉज डिप्रेशन इन हिज ट्रेड ओनली व्हेन द हॉलीडेज केम. हिज चाइल्ड वॉज नाउ 2 years ओल्ड. मुनिसैमी का जो चाइल्ड था बेटा वो 2 years का था. An age at which a child is apt to put all kinds of things into his mouth. और बेटा ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें बेटा बच्चे को कुछ भी, छोटे बच्चे को कुछ भी मिल जाए बेटा वो अपने माउथ में उसको डाल लेता है. Munisami, however, would not let him touch even the little crumbs that dropped on the ground. लेकिन बेटा मुनिसमी बहुत स्ट्रिक्ट था. वो उसको बेटा फ्लोर पर गिरे हुए भी अगर कुछ भी उसको लिटिल क्रम्स, थोड़े से टुकड़े भी मिल जाते थे बेटा, तो उसको भी टच नहीं करने देता था. पापा अ स्वीट फॉर मी, द लिटिल वन वुड आस्क. लिटिल चाइल्ड जो हमेशा पापा से अपने पूछता था कि पापा प्लीज़ एक स्वीट मुझे भी दे दीजिए. तो उसके पापा क्या बोलते थे बेटा पता है? यू विल ओनली हैव अ किक. तुम्हें सिर्फ एक किक मिलेगी. मीन्स गलत तरीके से उनके साथ बिहेव करते थे. वुड कम एंड एंग्री वॉइस ऑफ द फादर. वो बहुत एंग्री होते थे बेटा और उसको क्या बोलते थे कि नहीं तुम्हें कोई स्वीट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम्हारी पिटाई हो सकती है. हाउ यू शाउट एट अ लिटिल चाइल्ड, व्हाट डज इट नो? हिज वाइफ वुड प्रोटेस्ट. उसकी वाइफ बेटा, उस चाइल्ड की मम्मा उसको बचाने के लिए क्या बोले कि आप कैसे बोल रहे हो इस बच्चे के साथ, ये छोटा सा बच्चा है. हाउ
you shout at a little child, the child would stand crying for the sweet. अब वो child छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उस स्वीट्स के लिए रो रहा था। बेटा जिसके पापा का बिजनेस हो स्वीट्स का और उसके पापा उसी को ही स्वीट्स नहीं दे रहे तो वो बेचा रोएगा ही सही स्टूडेंट्स। एंड द चाइल्ड वुड स्टैंड क्राइंग फॉर द स्वीट, द साइट वुड फिल द मदर्स हार्ट विद पेन। और इससे बेटा उसकी मम्मा को बहुत दुख हुआ और उसको बहुत परेशान हुई। एंड एनरेज द फादर, लेकिन उसके पापा को क्या होता बेटा, बहुत गुस्सा आता था, वो बहुत एंग्री हो जाते थे। एनरेज का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एंग्री हो जाना। इट वॉज द री ओपनिंग डे ऑफ द स्कूल। मुनिसैमी गॉट अप अर्ली, वो बहुत जल्दी उठ के क्योंकि री ओपनिंग थी स्कूल की। ही हैड डेकोरेटेड द ट्रे विद कलर्ड पेपर एंड अरेंज द स्वीट्स इन इट। एट द मोमेंट द चाइल्ड अप्रोच द ट्रे, और इसी वक्त वो बच्चा जो है चाइल्ड ट्रे की तरफ भाग के आया। पिक्ड अप अ स्वीट फ्रॉम इट एंड पुट इट इन हिज माउथ, उसने वहाँ से स्वीट उठा ली और अपने माउथ में डाल ली। मुनिसैमी सॉ इट, डैम द फेलो, उसको अब्यूजिंग करने लग गया, गलत तरीके से बिहेव करने लग गया बेटा उसके साथ मुनिसैमी उसके फादर। ही क्राइड एंड गिव अ शार्प स्लैप, चिल्लाने लग गया बेटा मुनिसैमी और उसने बहुत ज़ोर से एक स्लैप लगा दिया बेटा उस टेंडर चीक पे, अपने चाइल्ड के कोमल कोमल चीक्स पे। ओके, ही देन हेस्टली बहुत जल्दी, हरिडली, he then hastily took up the tray and went out of the house. The child sank on the floor. Child जो है बेटा फ्लोर पर गिर गया। Shrieking with pain, चीखने लगा, क्राई करने लगा बेटा, रोने लगा, पेन से डर गया था बेटा वो। Meanwhile, और इसी बीच मुनिसैमी was walking along very fast with a tray on his head. The little fellow's hand has touched the sweets. और वो मन में क्या सोच रहे हैं कि उस लिटिल फेलो ने सारी स्वीट्स को टच कर लिया। इट्स एन इल ऑमन, अभी एक अपशकुन हो गया मेरे लिए, ये अच्छे संकेत नहीं है। सपोज इट अफेक्ट्स द सेल टुडे, हो सकता है कि इससे मेरी आज की दिन की जो सेल है वो भी अफेक्ट करे। ही रिफ्लेक्टेड जस्ट एज ही वॉज गोइंग along a lane. He suddenly saw, बट एकदम बेटा जैसे ही वो चीज़ें सोच रहा था तो क्या हुआ, ही सडनली सो अ बिग कार बियरिंग डाउन इन हिज डायरेक्शन, कि उसकी तरफ एक कार बढ़ती आ रही है। ओके, बियरिंग डाउन, मूविंग इन अ थ्रेटनिंग मैनर, थ्रेटनिंग तरीके से। ही हरीड टू अ साइड, वो बहुत जल्दी जल्दी साइड पर हुआ। बट व्हेन हिज फुट स्टम्प्ड अगेंस्ट अ बिग स्टोन, उसका जो बेटा फुट है वो कैसा हुआ, एक स्टोन के साथ टकरा गया। एंड ही फेल हेडलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर गिर गया। The sweet tray fell from his head into the gutter by the side of the road. और जो स्वीट्स की ट्रे वो लेके घूम रहा था बेटा अपने हेड के ऊपर, वो सारी अब कहाँ चलेगी, इन द गटर। बेटा जिस स्वीट्स को वो अपने बच्चे को दे नहीं रहा था, अपने बेटे को एक स्वीट भी नहीं उठाने दे रहा था, वो सभी की सभी स्वीट्स अब कहाँ चली गई, गटर के अंदर। क्योंकि बेटा हम बोलते हैं ना कि बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। Now students, the sweets, the whole lot from which he would not allow a single bit to be removed, even for his own child, lay in heap before his very eyes. उसकी आंखों के सामने बेटा सारी स्वीट्स उसकी गटर में चली गई। In the gutter they were lost. Oh ho! He beat his head and reflected bitterly. चिल्लाने लगा बेटा वो। I prayed to God for a good sale. मैंने तो गॉड से ये प्रे की थी कि मेरी आज सेल अच्छी हो। But I beat the child and was not aware. But मैंने अपने बेटे को मारा, मैंने उसकी पिटाई करी, and was not aware, और मुझे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा that he was the image of that same God. मैं जिस गॉड से अपने सेल के लिए प्रे कर रहा हूँ वो तो उसी गॉड की इमेज है। Once he was filled with an intense desire to go home and see the child. He got up, वो जल्दी से वहाँ से उठा and started back for home. The child had cried itself to sleep. बच्चा जो है बेटा वो सोए सोए ही रो रहा था। मुनिसैमी सॉ द रेड मार्क्स ऑफ हिज फिंगर्स ऑन द सॉफ्ट चीक, और जो बेटा मुनिसैमी ने उसको सुबह पिटाई की थी, उसको स्लैप लगाया था, उसके निशान जो है बेटा वो अभी तक देख पा रहा था कि उसके फिंगर्स के जो है मार्क्स वहाँ पर उसके चीक्स पर हैं। ही ऑल्सो सॉ द स्टेन्स ऑफ टीयर्स ओवर हिज फेस। मुनिसैमीज आइज फिल्ड विद टीयर्स, अब बेटा मुनिसैमी बहुत परेशान हो गया, उसकी आँखें जो है बेटा टीयर्स से भर गई। ही सेड टू हिज वाइफ, I swear to God, I will not touch the child again. कि मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगा ऐसे। I sinned, मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, and God has punished me, इसलिए गॉड ने मुझे पनिशमेंट दे दी है। He broke into sobs, वो रोने लगा। In this commotion means disturbance, or we can say noisy confusion, the child woke up from its sleep and looked at
them. Looked at them means looked at his parents. Munisemi got up and went to the basket in which he stored sweets. अब मुनिसेमी फटाफट से खड़ा हुआ उस बास्केट की तरफ गया जहाँ उसने स्वीट्स को स्टोर किया हुआ था. He came back with his hands full of sweets and gave them to the child. और बेटा उसने अपने बच्चों को स्वीट्स उठा के दे दी. My darling, from today you will be the first to have the स्वीट्स की मेरे प्यारे बच्चे आज से ही तुम्हें जो है सबसे पहले तुम्हें ही स्वीट्स मिलेंगी, बाकी किसी और को मिलेंगे. He said and kissed the cheek which he had slapped in the morning. The child smiled, biting a sweet. He looked at his parents and burst into a laugh. Now students, I hope that all of you have understood this part C well. Now students, read part C once again, and after that students, try exercise of part C. Okay, try exercise. First just read it once again and then students try exercise. That's all for today students. Thanks and have a nice day.